let's talk about what's happening in Sandeshkhali. Well, Sandeshkhali has been at the epicenter of a political firestorm that began after allegations emerged against TMC leaders of excesses against residents, from land grabbing to sexual harassment. Well, it has been 51 days, but the alleged kingpin, Sheikh Shahjahan, is still at large. West Bengal government initiated an outreach program 6 days ago for people to submit any complaints if they have against the TMC leader, Sheikh Shahjahan. Since then, the government office in Sandeshkhali has received multiple complaints against Sheikh Shahjahan. Bengal ministers Sujit Bose and Partha Bhaumik yesterday visited trouble-torn Sandeshkhali to take stock of the situation, while a CPIM delegation was stopped midway. Let us first listen in to the horror that was unleashed on the residents of Sandeshkhali by Sheikh Shahjahan and his aides Uttam Sardar and Shibu Hazra. पुलिस ने जो कैंप लगाया है बेर बुजुर्ग संदेशखाली के इलाके में, वहां पर जो है कपल पहुंचा है जो 60 सालों से घर से दूर था। उनसे जानेंगे। दादा, आप हिंदी बोलते हैं क्या? क्यों आप कैसे आप घर से दूर थे? 7 साल से आप क्या वापस नहीं आ पा रहे थे? अरे वो जो मेरे जगह पे मेरे ले लिया, उसका मेरे को धमकी दिया, यहीं पर आएगा तो तुमको मार देगा। पिछले में हम आज मेरे 7 साल मेरे 10 साल हो गया। तो आपका जमीन भी ले लिया? और हाँ, जमीन भी ले लिया। अभी वो देखो उधर फिर माटी पूरा भरट कर दिया, शुद्ध घाट टुकड़ा रख दिया, बाद में पूरा सब ले लिया। पुकुर में मांस था, 30,000 टका मांस में पूरा लूट कर लिया। अभी मेरे को बोला है जिधर पाएगा उधर तुमको मर्डर कर देगा ना। पुलिस का बोला है, पुलिस ने कम्प्लेन नहीं लिया है। लेकर बाद में मैंने नजर भी कम्प्लेन दिया है, नजर से कंप्लेंट दिया है। कंप्लेंट उधर जो मैंने संदेशखाली पहुंचा है। किन लोगों ने आपकी ये जमीन ले ली थी? सिराजुद्दीन शेख। तो ये क्या शाहजहान का भाई? हाँ, शाहजहान का भाई है सिराजुद्दीन शेख। और उसके बाद 7 साल तक आप वापस नहीं आ पाए? नहीं। এখনো কি ভয় করে আপনার? ভয় তো করবে, কেননা ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এখানে তো এসে থাকার মতো নেই। তারা তো মারধর করছে, আমার স্বামীকে মেরেছে এখানে বাজারের উপরে। তাহলে আমরা যাবো কোথায়? এখানে তো আমাদের সুরক্ষা কেউ দিচ্ছে না। পুলিশের উপরে কোনো ভরসা নাই। পুলিশ তো কোনো কেসই নেয় না। কেস নিতে গেলে বলে কি শাহজাহানের কাছে যাও, শাহজাহানের কাছে গেলে বিচার পাবে। 7 বছর আপনারা ঘর? হ্যাঁ, 7 বছর ঘর ছাড়া। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে पढ़ते পারছে না। अभी कैमरा लेके जाएगा तो मेरा देखेगा। अभी कैमरा लेके जाएगा तो मेरा घर भी देखेगा, मेरा जगह भी देखेगा, सब कुछ देख लोगे तो पाएगा। मैं झूठ बोलता है कि मैंने बोलता है, पूरा देखेगा तो मेरे माटी भर করে দিয়েছে, ঘর ভাঙচুর করেছে, কোনো কিছু मेरा जगह भी पूरा भरट कर लिया। संदेशखाली में कल हमने देखा किस तरह एक के बाद एक जगहों पर जो है हिंसा दिखने को मिली और सबका आरोप था शेख शाहजहान के भाई शिराज के खिलाफ। आज उसके बाद ही पुलिस और सरकार की तरफ से एक कैंप लगाया गया है उन स्थानीय लोगों के लिए और गांव के लोगों के लिए जिनकी जो है शिकायत यहाँ पे दर्ज की जा रही है। यहीं पर जो है कुछ महिलाएं आए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, की अभियोग নিয়ে এখানে এসেছেন? আমাদের জমি জোর করে নিয়ে, আমার ঠাকুরদার নামের জমি আমার বাবা করে খেত, সেই জমি অন্য লোক করে খাচ্ছে। এখন সাধারণ শেখের কাছে গিয়েছিলাম, আমরাও গিয়েছিলাম, আমাদের কোনো কথা শুনিনি। আমাদের কাছে টাকা নেই বলে আমরা গরিব মানুষ। এখন যে করে খাচ্ছে সে অনেক টাকা দিয়েছে, তাই জন্যই সেই জমিটাও ওদের করে দিয়েছে। তারা এখন ঘর বাড়ি করে আছে। তো কারা জোর করে আপনার জমিটা নিয়ে নিল? ছাত্তার মোল্লা। তারা কি শাহজাহানের সঙ্গে থাকতো না? ওদের সঙ্গে কি কাজ করে? কাজ কাম করতো কি জানি না, কিন্তু ওদের কাছে গিয়েছে, টাকা পয়সা দিয়েছে, ওদের সাহায্যে আর কি জমিটা নিয়ে নিয়েছে। তো শাহজাহানের কাছে গিয়ে কোনো সুরাহা মেলেনি? নাই, আমাদের কোনো সুরাহাও মিলেনি। আপনার কমপ্লেন্ট এখানে জমা নিয়ে? হ্যাঁ, জমা দিয়েছি, রিসিপ্ট পেয়ে গেছি। আমি আশা করি আমাদের জমি আমি ফিরে পেতে চাই। जब से इस तरीके का आक्रोश और गुस्सा ये स्थानीय लोगों में देखने को मिला है, उसके बाद हमने देखा किस तरह कल 9 लोगों को अपनी जमीन जो है फिर एक बार वापस दी गई है। और इसी तरीके के कैंप जो है अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं जहां पर शिकायतें सुनी जा रही है, शिकायतें दर्ज भी की जा रही है। Now, days before, agitating locals set fire to a house belonging to Shahjahan's brother Shiraz, upset over their land being allegedly illegally occupied by the TMC Neta's brother. Armed with sticks, they set ablaze thatched structures, venting their fury against their elusive TMC leader and his brother. The Bengal government has assured the locals that all the illegal ponds will be broken and converted into canals.
However, BJP and the left have alleged that there is no law and order in the state and called it absolute jungle raj. Listen in to the political war of words. एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं के साथ अपराधी खुलेआम बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं और गिरफ्तार भी नहीं होते। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ममता सरकार और टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। अभी संदेशखाली में आप देख लीजिए, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। कल मैंने एक सोशल मीडिया पर देखा है, एक लड़की को बलात्कार करने के बाद ईंट के भट्टा के पास फेंक कर चले गए। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ सीटों के तालमेल में लगी हुई हैं। अरे राजनीति अलग विषय है, चुनाव अलग विषय है, लेकिन सत्ता में बैठकर लोगों की सुरक्षा करना, बहनों को सम्मान दिलाना, ये प्रथम काम होना चाहिए। और इसलिए मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता का कानून का राज नहीं, जंगल राज और अपराधियों का राज आ गया है। ममता सरकार क्या है, वो संदेशखाली घटना से लोगों का और एक बार जानकारी हुआ। तो जिस ढंग से महिला लोगों को अत्याचार हुआ, गांव का लोगों को जमीन हड़प कर लिया, सारे तृणमूल का नेता, तृणमूल का सारे पदाधिकारी है, और जैसे शेख शाहनाज वो उधाव है, पुलिस कुछ कर नहीं, पुलिस उसको पकड़ने का प्रयास तक नहीं कर रहा है। ये सारे स्थिति बंगाल में ऐसा स्थिति बन गया जो बंगाल का सारे लोग अभी ममता सरकार का ऊपर नाखुश है। As we always repeatedly said that this Mamata's rule for last 13 years, we term it as a rule of the criminal, for the criminal and by the criminal. And this is not the first, I tell you. There is a Park Street gang rape. Mamata Banerjee said it is a minor incident. After that, the gang rape was in Kamdoni. That also, Mamata Banerjee said, opposition is flaring up, small things. So whenever there's a rape, mass rape is happening, Mamata Banerjee always make it, belittle it. If she harshly said, we will not tolerate and punish the criminal, it can be reduced. Because most of the criminals are their party followers. And we have some breaking inputs coming in. Well, the National Commission for Scheduled Tribes has finally submitted a report, and the damning allegations that they have leveled and they have found. If you can remember that a team went on Thursday in Sandeshkhali to meet the victims of Sandeshkhali, and now the ST panel's report that has come in says that tribals were tortured for voting against TMC. The Manrega wages were forcibly taken away by these TMC leaders, and the panel has received over 50 complaints against the TMC Neta Shahjahan Sheikh and his aides. Now, this is just the beginning of more allegations that the Sandeshkhali women have been alleging. They have been alleging that how they were kidnapped, raped and tortured by these men. And now an ST panel that had gone to Sandeshkhali to probe has finally found more proof against the TMC Netas. We have Adrija also on the phone line. Adrija, the proof against Shahjahan Sheikh and his aides is piling up. When will Mamata Banerjee take action? Well, absolutely. Usually 50 days have passed since Shahjahan Sheikh has been absconding, who happens to be the mind of all the criminal activities that is to go on in Sandeshkhali. However, Mamata Banerjee government continues to mention that both of the close aides have been arrested by the police, and Shahjahan will soon be arrested because police is, doing a search in order to find where Shahjahan is and find out his whereabouts. But still now Shahjahan Sheikh, is not arrested. That the demand of the locals in Sandeshkhali also is the same, that as soon as possible Shahjahan Sheikh should be arrested, because they still doesn't feel safe in their own house because he is still out there. So, of course, the protests we are seeing are breaking out in various parts of Sandeshkhali, demanding that Shahjahan Sheikh be arrested as soon as possible. And the women of Sandeshkhali are also mentioning that it's not only Shahjahan Sheikh on whom the onus falls of all these atrocities, it is also Mamata Banerjee and her entire party who should step up and take responsibility for what has happened in Sandeshkhali for so many years.
Now, Adrija, let's talk about why Shahjahan Sheikh being shielded. The BJP has been claiming that he has been shielded by the Mamata Sarkar just because he is responsible for getting the Muslim votes for the TMC. Well, absolutely, BJP from day one has been mentioning that, Shahjahan Sheikh is a very important person for TMC, and especially ahead of the election, Shahjahan Sheikh, is being shielded by Mamata Banerjee herself. And in fact, we have seen Locket Chatterjee making a comment, via one of the press conferences where she has mentioned that there has been a deal with the TMC and Shahjahan Sheikh where Shahjahan Sheikh has offered 30% votes for TMC in the Lok Sabha election, and therefore he is being shielded by the TMC. Of course, these are allegations, but proof have not come in yet. But of course, that remains the fact that Shahjahan Sheikh is still not arrested, and 50 days have already passed since all of these incidents have come to light, and Shahjahan Sheikh still remains absconding.